Welcome to our digital classes. Today we are going to start our Unit 14 and poem number 4, that is A Thing of Beauty, written by John Keats. A Thing of Beauty is an excerpt from John Keats' famous poem Endymion. In this poem, the great romantic poet gives a definite message, and what's that message is? A thing of beauty is a joy forever. Its beauty increases and it never passes into nothingness. The poet says that something which is beautiful, which we find beautiful, then its beauty it increases day by day. It never passes into nothingness. A thing of beauty removes away the pall of unhappiness and it covers our dark spirits. The beauties of the earth are lovelier than the lovely tales we have heard or read. So before starting this poem, let us discuss about the poet. That John Keats, he was born in 1795 and died in 1821. He was a British romantic poet. Although he was trained to be a surgeon, he did surgery, but later he decided to devote himself wholly to the poetry. He decided that he would become a poet. Its secret, his power to sway and that delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. The following is an excerpt from this poem and a poetic romance. The poem is based on Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and the poet who lived in Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. So let's start the poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. So here the poet says that a thing which is beautiful, which we find beautiful, it's a joy forever. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा. जो एक सुंदर चीज़ है वो हमेशा के लिए सुंदर रहती है, वो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती है. मतलब इसकी जो ब्यूटी होती है, लवलीनेस, वो बढ़ती जाती है. इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. लेकिन फिर क्या होता है, ये हमें क्या करती है, शांति देती है. ठीक है, हमें क्वाइटनेस देती है एंड अ स्लीप, और हमें ऐसे सपनों में ले जाती है जो फुल ऑफ ड्रीम्स है, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. ठीक है, एक ठंडी मधुर जो सांस है वहाँ उसमें ले जाती है. इट प्रोवाइड्स साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, क्वाइट एंड एफलेट ब्रीदिंग. मीन्स जब हम किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं, ब्यूटीफुल थिंग को देखते हैं, तो क्या करती है, उसकी जो ब्यूटी हमें अट्रैक्ट करती है. और सुंदर चीज़, एक फ्लावर को ही हम अगर इमेजिन करें कि एक रोज़ फ्लावर हमने देखा है और उस फ्लावर की जो ब्यूटी है वो हमें क्या देती है, हमें वो कंफर्ट देती है. हमें उसकी जो ब्यूटी है वो क्या करती है, बहुत सुंदर लगती है और वो हमें शांति देती है. क्लियर, प्लेजेंट फील करते हैं हम एक साउंड स्लीप देती है जिसे हम क्या सपने लेते हैं, एफर्ट्स ब्रीदिंग लेते हैं. क्लियर. Therefore, on every morrow are we reading. So the poet says that इसलिए, therefore means इसलिए, every morrow means morning, next day, we are reading होता है weaving into a wreath, मतलब गूथे जा रहे, जैसे हम कहते हैं ना आपस में बाउंड होते जा रहे हैं. ठीक है, a flowery band to bind us to the earth. तो क्या है, हमें एक आपस में क्या कर रहा है, जो अगले ही दिन हम क्या हो जाते हैं, फूलों की तरह एक पट्टी में आपस में गुथ रहे हैं. मीन्स
आपस में ही गुथे जा रहे, रद्द हो रहे हैं, वीविंग होती जा रही है, ठीक है। A flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dirt. And in spite of the despondence means disappointment. And so in spite of this disappointment of the inhuman dirt, inhuman होता है against human values, ठीक है। And dirt is that lack. So जो lack of inhuman जो values है हमारे अंदर, जो हमने देखा है कि जो अर्थ है, अब दुनिया हमारी कैसी, कितनी ज़्यादा इसके अंदर इनह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं डे बाय डे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उस टाइप का क्राइम हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये सब क्या होता है, हमें जब हम किसी चीज़ को प्रेज़ करना, किसी चीज़ की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, अच्छाई ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो अच्छा ही होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम नेगेटिव चीज़ों को हम इग्नोर ही कर दें, उनमें भी अच्छाई देखें, उनकी कुछ गलत कर रहे हैं उसको भी हम अच्छा ही कहें। नो, हेयर पोइट मीन्स टू से दैट कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हाँ, बुरी चीज़ के लिए हम उसे बुरा भी कहें, लेकिन अच्छी चीज़ कभी भी निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए। आपको किसी में कुछ अच्छाई दिखे उसको उजागर करना चाहिए। वो जो अच्छाई है, हमें कोई हम ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हैं, कुछ भी अच्छाई देखते हैं, तो वो हमें हमेशा सुकून देती है। क्लियर? Of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened way, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. So here again the poet says that कि जो ये the few have a noble heart, sad days, evil and healthy ways dominate करते हैं हमारी लाइफ को, ठीक है। In spite of all these things, some beautiful things they remove and cover the sad feeling from our hearts. So जो ये मानवीय जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या है, जब हम कुछ अच्छा देखते हैं, अच्छाई को स्प्रेड करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें अच्छाई भी मिलती है। वो कहते हैं ना, पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। तो हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ लेनी चाहिए, पॉजिटिव बिहेव करना चाहिए। क्लियर? So the same way it says, beauty of the natural object take away the gloom from our sad hearts. Clear? Such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady bone. So again, the poet says that that everything, it glooms. The beauty of the natural objects, it takes away the gloom from our sad hearts, dark spirits, whatever the dark spirits are there. So the thing of beauty, it takes away all gloom from our sad hearts. हमारे जो sad hearts हैं, जो feelings हैं, उन सबको क्या कर देती है ये अपने साथ it takes away. Okay, then sun, such the sun, the moon, the trees, old and young, sprouting a shady moon. So again, the sprouting is producing or developing, and the boon is blessing. So again, the poet says that all these beautiful things of nature are boon for humanities. Whatever the beautiful things are, it can be the sun, the moon, old and young trees, they all provide a shady shelter to all of us. For simple sheep, such are daffodils with the green world they live in. For simple sheep, such as daffodils with the green world they live in, clear rills, that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid-forest brake, rich with sprinkling of fair musk rose blooms. So similarly, the poet says that all the natural things, they provide us shady shelter, and it is a boon for the simple sheep. Okay, so it's a blessing for a sheep, and it's like daffodil. Daffodils are yellow flowers, very beautiful flowers, पीले रंग के फूल होते हैं। सो वो कह रहे हैं कि ऐसे ही जो है डैफोडिल फ्लावर्स भी हैं। सो क्या है, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, आसपास सब ग्रीनरी होती है, प्लांट्स जो है वो ग्रीन है, उनके बीच में जो डैफोडिल फ्लावर्स है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। बीच में
सब जगह हरियाली और बीच में वो हरे हरे फूल, जैसे कि हम पंजाब के अगर खेतों की बात करें तो वहाँ पर सरसों के खेत होते हैं, वहाँ पीले पीले सरसों के जो फूल होते हैं कितने सुंदर दिखते हैं। द सिमिलर वे डैफोडिल फ्लावर्स भी वैसे ही दिखते हैं। तो उसमें पोइट ब्यूटी ढूंढता है, ब्यूटी की बात करते हैं पोइट की। दे लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड द क्लियर रिल्स दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ट। सो again it says that the clear transparent जो rills हैं, rills means small streams, छोटी छोटी जो streams होती हैं, ओके। covert means shelter of bushes, जैसे झाड़ियाँ होती हैं ना, that so this is cooling covert। so अब the poet says that कि जो ये क्लियर रिल्स हैं, झरने हैं, दैट फॉर दैम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ट में अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो जब एक गर्मी का मौसम होता है, अगेंस्ट द हॉट सीज़न, बहुत गर्मी हो रही है और आप इमेजिन करो इस सीन को, अगर आप इमेजिन करेंगे तो आपको उसमें ब्यूटी नज़र आएगी, दैट कि बहुत गर्मी हो रही है और आप खेतों के बीच में हैं और जहाँ पर येलो फ्लावर्स हैं एंड आसपास क्या है, झरने, छोटे छोटे झरने हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स, रिल्स हैं, ओके। सो पौधे हैं आसपास, तो ऑब्वियस सी बात है हमें वहाँ पर ठंडक महसूस होगी, ठंडा लगेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी के बीच में आप खेतों में जब जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और साथ में झरने हैं। द सेम वे द पोइट सेज दैट द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज रोज ब्लूम्स। सो मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड फॉरेस्ट में इन द मिडल ऑफ, okay, and BRAKE, break means the thicket here, it's not the break of the bike here, BRAKE means thicket, thicket means झाड़ियाँ जो होती हैं, okay। so the same way the poet says that in the middle the thickets, जो झाड़ियाँ हैं वो सब क्या है, जंगल में उगी हुई जो झाड़ियाँ हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, okay, इधर उधर scattered है। so they protect themselves from the hot season and the breaks are growing in the middle of the forest and they have been made more beautiful and grand by a sprinkling of blooming musk roses। कि जो जो आसपास झाड़ियाँ उनके बीच में क्या है, मस्क रोजेस, जो रोज़ फ्लावर्स उगे हुए हैं झाड़ियों के बीच में। जैसे क्या होता है, रोज़ का जो पौधा है, जो फ्लावर है, रोज़ फ्लावर है, वो कांटों के बीच में होता है, तो उसकी जो खुशबू होती है और उसकी जो फ्रेगरेंस है और उसकी जो ब्यूटी है वो दूर से ही नज़र आती है। तो हमें वो कांटे नहीं दिखते हैं, हमारी नज़र सिर्फ उस सुंदर से रोज़ फ्लावर पे ही जाती है, उसके जो कांटों से तो हमारी नज़र हट ही जाती है। सो दिस इज़ व्हाट द पोइट वांट्स टू से, दैट कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे माइंड को अट्रैक्ट करती है और हमें हमेशा शांति और कंफर्ट देती है। क्लियर? सो the poet says that and such to grandeur of the dooms। so grandeur means that magnificence, that is जैसे हम कहते हैं शान और शौकत, वैभव, okay। so the grandeur and the dooms होता है जो last day of our life, that क़यामत का दिन जिसे हम कहते हैं, okay। so here the poet says that the magnificence and the beauty, it surpasses grandeur of the dooms that we have imagined for our mighty dead forefather। so this takes away that dooms, जो हमारे mighty forefathers ने, हमारे जो dead forefathers हैं, उन्होंने क्या किए होंगे कभी, जो उन्होंने सोचे होंगे कभी, ठीक है। तो उनके लिए हम ये क्या करते हैं, हम उनके लिए जिसे हम कहते हैं कल्पना करते हैं, उनके लिए इमेजिन कर रहे हैं हम, ओके। और ये जो सारी खूबसूरत जो कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इमॉर्टल ड्रिंक, ऑल द लवली टेल्स वी हैव हर्ड और रेड, जितनी भी हमने कहानियाँ टेल्स ये पढ़ी हैं वो सब क्या है, दे आर एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। एंडलेस फाउंटेन मतलब एक जैसे झरना है जो एंडलेस है, ओके। इमॉर्टल क्या होता है, एक अमृत वाला ड्रिंक जिसे हम कहते हैं अमृत, ओके। इमॉर्टल ड्रिंक उसकी तरह है ये। और पोरिंग अनटू अस, नॉट इनटू, अनटू मीन्स हमारे ऊपर, ओके। सो अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग। तो ये सारी खूबसूरत जो चीज़ें हैं वो कैसी लग रही हैं, जैसे कि स्वर्ग के किनारे से, स्वर्ग से आई हुई हैं। और ये जो इमॉर्टल ड्रिंक वो फव्वारे की तरह फूटता हुआ क्या कर रहा है, हमारे अंदर
unto us means हमारे अंदर pour हो रहा, उड़ेल दिया जैसे स्वर्ग से किसी ने हमारे ऊपर. Clear? So this is what the poet wants to say in this poem, that whatever is beautiful, it gives us joy and love. Okay. And poet's sensuous imagination that the nature provides us the things of the rare beauty. A pleasant place, the shade under a tree provides us quiet power. हमें शांति देता है. Similarly, a thing of beauty, it transports us to peace and security, and we enjoy a sleep of dreams, health, and peace. Every morning we fascinate with beautiful things, and this all. Okay, so this is all about our poem, and in this poem we have discussed all the aspects of a beautiful thing. Let us discuss the main points. That the poet says that a thing of beauty is a joy forever, and its value, it never decreases. The poet says the beauty is a shelter for us, and it gives a sound sleep. Then again, the clear streams, it provides a cooling, shady cover of thickets against the hot season. And the daffodil flowers, they bloom among the green surroundings. Beautiful musk roses, they bloom around the mid forests. And the beauty it provided by the beautiful objects of nature is lovelier than all the stories that we have heard or read. Clear? So this is all about our poem. Thank you. Have a nice day.